Hello students, in this video I will tell you about the complex number class 11 and I studied ISC mathematics by ML Agrawal. The chapter 5 complex number. What is the meaning of the complex number? You have read so many type of numbers in the number system like natural number, whole number, integers, real number, decimal number, square number, irrational number, rational number, मतलब बहुत सारे numbers पढ़ चुके हैं. But now you will study one more type of number, एक और number. इसके पहले up to class 10 the everyone know about this the number, the biggest number up to class 10 is the real one. Real number is the combination or you can say the union of the rational and irrational number. But one more number is there from the class 11 that you will study, that is called the imaginary number. Imaginary number means you can imagine only but you cannot find. इसे find नहीं करते हैं, इसे imagine करते हैं. Because in computer calculator that type of number will give the syntax error. I will show you the how the it will give and you can check in your computer, in your calculator also. Suppose you have x square minus 1 is equal to 0 and anybody asks the value of y x, then you can tell that the x square is equal to 1, so x is equal to plus minus 1 means two values of x. But my question is another. If you have x square plus 1 is equal to 0, if anybody asks, then what you will say? Then x square is equal to minus 1. So whether you have the x is equal to plus minus 1 or any other number? No, other number, and this is under root of minus 1. अब इस नंबर को अगर हम कैलकुलेटर कंप्यूटर कहीं पे भी निकालें तो इट विल गिव द सिंटैक्स एरर. अंडर रूट, अगर हम अंडर रूट कोई नंबर है 2 है, इफ यू फाइंड द अंडर रूट द वैल्यू ऑफ 2 you will get the any means the non-terminating decimal like the 1.4144 like this. But if you have minus sign inside the under root तो फिर क्या होगा कि ये सिंटैक्स एरर है. इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको नहीं निकाल पाएंगे. अगर इसको निकाल नहीं पाएंगे तो इसको क्या करेंगे? That is the question, means we will say that this is the imaginary number. इसको imaginary number बोलते हैं. Means under root minus 1 या हम ये कहते हैं the number, the negative number which is inside the under root is called the imaginary number. तो and this imaginary number is represented by I. इसको I से represent किया जाता है, small I. This under root minus 1. And now we will talk about the complex number. Complex number का meaning क्या होती है? Complex number means जब हम इस imaginary number को किसी real number में add कर दें, subtract कर दें या कोई भी multiply divide में, in that case you will get a complex number. And at last I will say the definition of the number. Every number, जो भी नंबर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है, the every number is the complex number. I will show you later. Every number is the complex number. अब कुछ चीजें प्रॉपर्टीज हैं I के बारे में, यानी imaginary number के बारे में. If I write here I is equal to under root minus 1 and you take the square both the sides, so what you will get is equal to minus 1. I square, both the side is square. And if you multiply the I in these two, मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ I से multiply कर दे, if you multiply with the I, what you will get? I cube here and here minus I, क्योंकि I से multiply with I, both the sides.
and if you take the square of this number, अगर इसको स्क्वायर कर दे तो what you will get? I to the power 4 is equal to 1 because minus 1 का square 1. These four values are there and you learn these four values कि जहां पे under root minus 1 होगा you will write I. Okay, you will write I. Where you get the under root minus 1 you will write I. Where you get the I square you will write minus 1, उसकी जगह पे minus है. Where you get the I cube you will write the minus I cube की जगह पे minus I. और जहां पे I to the power 4 होगा you will write 1. बस इसकी जगह उल्टा चल गया है, मतलब अंडर रूट माइनस 1 नहीं लिखा जाता है. In place of under root minus 1 you will write the I. So for example if you have minus 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ द इर्रेशनल नंबर जो पहले पढ़ाया गया है. इस अंडर रूट माइनस 1 को I लिखेंगे एंड अंडर रूट 2 में दिस यू कैन राइट एज I रूट 2. फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल, इफ माइनस 256 तो क्या लिखेंगे? इसको माइनस 16 ले लेंगे, 16 का स्क्वायर ये है तो माइनस 16 आ गया है. माइनस कैन नॉट यू कैन नॉट टेक आउटसाइड द अंडर रूट, तो दिस यू विल राइट माइनस 1 इंटू 256 एंड देन दिस विल बी I एंड दिस विल बी 16, तो इसको हम 16I लिखेंगे. यू विल राइट 16I. ओके, so these are the you can note down and these are the facts about the imaginary number. Now some more things about the imaginary number, that how to simplify the values. For example, if you want to simplify the I to the power 5 plus I to the power 9 plus I to the power 12. Suppose first of all every power जो भी more than 4 होंगी, greater than 4, that you will change less than 4 are equal to 4, means 4 के मल्टीपल में चेंज करना है. अगर रेस्ट हुआ जैसे 4 के मल्टीपल में तो इसको क्या लिख सकते हैं? I to the power 4 into प्लस 1, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू I to the power 5, I to the power 4 into I, so it will be I to the power 5. This you can write as I to the power 9 means 8 into I, and this one you will write as the I to the power 4 into I to the power 4 into I to, तो ये तो वैसे भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको भी मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे एंड द रिमेनिंग नंबर, जैसे 4 से इसको डिवाइड किया 4 2 is 8 and the remaining number, the remainder you will write as I to, जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल वन मोर I राइट हियर 14, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 plus I to the power 4, 4 3 is 12 and what is the remainder is 2, तो I to the power 2 you will write. And after writing this value, as you know this is 1, तो I बचा यहाँ पे, this is 1 तो I बचा, किसी का स्क्वायर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, प्लस 1 एंड प्लस I स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया, I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 बताया हमने, तो this 2 कैंसिल means answer is 2I. This is the simplification. तो the value, the power, the biggest power also you can change in the terms of I to the power 4, I to the power 3, I to the power 2, I to the power 1. तो जैसे for one more example, अगर हमारे पास में I to the power 259, अब इसको डिवाइड करना है तो you can write I to the power 4, 4 से इसको डिवाइड करो, उसको यही पावर में लिख दे, तो 4 6 is 24, 1 4 4 is 16, ये you will get the 256, okay, and then the remainder is 3, तो I to the power 3, so the value is ये 1 हो जाएगा, I क्यूब क्या होता है? माइनस I, तो the answer is माइनस I, मतलब इतनी बड़ी पावर चेंज हो गई माइनस I.
तो ये मेथड है हाउ टू सिंप्लीफाई द आई, द बिगेस्ट पावर ऑफ द आई, बिगर पावर। नाउ आई टेल यू द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बताया जब आई को किसी भी नंबर रियल नंबर में ऐड करें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 यू है, 2 में आई ऐड करें तो इट मींस दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, this real number and this is the imaginary number. The combination of the real number and imaginary number known as the complex number. For example, a plus b, bi. A is the a and b both are the real, both belongs to real. भाई इसके साथ भी तो हम ये 3i भी ले सकते हैं. This is also the imaginary number. कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा i के साथ, that is called the imaginary number. And when we add in the pure real, मतलब एक रियल अलग से जिसमें आई नहीं लगा, तो this number is called the complex number. तो a and b like 2 and 3 both belongs to real number, but the combination of this is known as the complex number. And this is denoted by z, represented by the z. इसको हम x और y भी ले सकते हैं, x plus i y भी ले सकते हैं. This you can write, but ये depends on a or b लेते हैं कि x और y. This is called the complex number. And one fact about the complex number, can you write the 3 as the complex number? Yes, 3 plus 0 dot i. 0 भी तो real number है, 3 भी real number है, i imaginary number, then the total is complex number. ये complex number. Minus 3 can you write? Yes, 0 dot i, also the complex number. Every number is the complex number. And when you add the two complex number, the result is complex number. When you subtract the two complex number, the result is complex number. When you multiply the complex number, then also you get the complex one. मतलब कभी भी कोई भी नंबर जब हम multiply, add, subtract ऑपरेशन करेंगे, you will get a complex number. Then one more thing, that is called the conjugate of the number. अभी हम बताएंगे, पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी, conjugate of z. Z means a plus ib. Conjugate of z is it represented by z bar. इसको z के ऊपर ये लगा दिया जाता है. This is called conjugate of z. And this is equal to a minus ib. इसका what do you understand? Only change the sign of the imaginary value. अब ये ib है, ये imaginary value है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया. अगर हम ये कहें कि हमारे पास 3 minus 2i है कोई भी नंबर, and you have to find its conjugate, so what you will get? 3 plus 2i. Change only the sign of i, मतलब imaginary value, इसी का साइन चेंज होगा, इसका नहीं, रियल वैल्यू का नहीं होगा. For one more example, if you have z is equal to minus 4i plus 2 and find the conjugate of this, तो ये नहीं कि यहाँ चेंज हो जाएगा, because it is real value, it is imaginary value, तो imaginary value का साइन चेंज होगा and this plus 2. So this is the meaning of the conjugate of the complex number. Why I am telling? क्योंकि एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे अगर कहीं क्वेश्चन लिखा है 1/√2, so everyone says that don't write the irrational number in the denominator, multiply by its the conjugate. मतलब ये ऐसे होता है ना, जैसे √2 plus 3 है तो इसके conjugate से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें. Similarly here also you will not get in the answer the I as denominator. Denominator में I नहीं होगा. For one example, जैसे 1/i है तो this is not the answer. This cannot be answer. You have to change the denominator as real number. सिर्फ real हो, I हो ही. हमें मालूम है कि I अगर है सिंपल I, तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक I से मल्टीप्लाई कर दें तो you will get I square and this is -1, change it to the real. कोशिश करेंगे कि कोई भी नंबर हो I हो, I स्क्वायर आ जाए या I to the power 4 है, तो I to the power 4 करने से कोई मतलब नहीं. If you multiply with I, so you will get I upon I square.
एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आई, क्योंकि माइनस 1 होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। Similarly, if you had 1 upon I plus 2 upon 2i and you have to change into the मतलब ये डिनोमिनेटर से हटाना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करें i से, क्योंकि i हमारा स्क्वायर हो जाएगा, बट दिस i you multiply in the numerator also, तो i स्क्वायर प्लस 2i upon 2i स्क्वायर, जहां पे आई स्क्वायर है यू विल पुट -1 प्लस 2i अपॉन -2। दिस इज द, अब माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं तो 1 minus 2i by 2, दिस इज द आंसर। यू कैन चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, मींस डिनोमिनेटर हैविंग द रियल नंबर नाउ। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, i के बारे में है। और अगर हमारे पास इफ यू हैव द नंबर 1 अपॉन a प्लस IB फॉर्म, a प्लस IB मतलब नीचे रियल और इसका दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी जो भी थे इमेजिनरी होंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब जो साइन होगा उसका जस्ट अपोजिट, तो ऊपर a माइनस IB है एंड इन द डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आई का भी तो स्क्वायर हो, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो एट लास्ट यू कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाइक दिस। Then when you multiply in the form a plus ib, a minus ib, you will get in denominator a square plus b square and numerator a minus, अब ये 1 है तो a minus ib, if any other number then you have to multiply. One example I tell you, 2i upon root 3 plus 2i, ओके, या इसको 2i की जगह हम उसको 3i भी लिख सकते हैं, एंड नाउ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो कॉन्जुगेट से इसके रूट 3 माइनस 3i एंड रूट 3 माइनस 3i, दिस 2i you multiply in the numerator, तो 2 root 3i minus 6i square whole upon, use the formula a plus b and a minus b, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस हमने बताया कि i डायरेक्टली b ले ले तो b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 रूट 3i, अब i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 6 होल अपॉन 3 प्लस 9 यानी 12, दिस इज द आंसर। So by this way you can simplify, do not write the imaginary number or complex number in the denominator. Thank you, and in the next video I will tell you some more things about the complex number.